Hello everyone, welcome back to another class of body fluids and circulation. So today we are going to discuss about regulation of cardiac activity. The activity of heart, how it is regulated. We are discussing about this topic. Okay. So the heart is myogenic. Myogenic means it can be auto-regulated. Okay. So in normal condition, human heart can be auto-regulated. वो अपने आप regulate हो जाता है by some specialized muscles, which are the nodal tissue. We know there are SA node, then AV node. Okay, there are SA node, AV node. These nodes they help in the regulation of heart in normal condition. Okay. Also, the condition of the heart or the regulation of the heart can be altered by some neural system. So, in brain there is a region known as medulla oblongata. Okay. So, this medulla oblongata of the brain is connected with the heart by some nervous system, which is the autonomic nervous system. Okay, then this autonomic nervous system is again divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. You can see the center for these type of nervous system. This is located in the medulla oblongata region. This is the center of sympathetic nervous system, and this is the center for parasympathetic. Okay, this sympathetic and parasympathetic nervous system, they help in regulating the heart by increasing or by decreasing the heart rate. Okay, like this parasympathetic, this decrease the heart rate. Okay, ये heart rate को decrease करता है in some condition. Okay, and the sympathetic neural system, it helps in increasing the heart rate. Okay, so we can say that to alter the heart rate, हमें पता है कि normal condition में heart beat करता है 72 times in a minute, but due to some different condition, like अगर हम ज़्यादा exercise करते, then what happen? जो heart rate है वो increase हो जाता है. Means अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते तो sympathetic neural system it will control the heart's activity. Thus it will increase the heart rate. Okay. So like this parasympathetic, this works opposite to that of sympathetic neural system. It decreases the heart rate. Okay. So we can say that this sympathetic and parasympathetic means the ANS, autonomic neural system, it also regulates the cardiac activity in some situation. Okay. Here you can see there is given the relation of heart and the brain, means how the medullary region of the brain it regulates the heart's activity. Okay. So you can see the sympathetic nerve it increases the heart rate. Okay. सिंपैथेटिक नर्व जो प्रेजेंट होता है मेडुलरी रीजन में, मींस मेडुलरी रीजन से जो ओरिजिनेट होता है एंड इट कनेक्ट विद द हार्ट, इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट एट डिफरेंट कंडीशन. ओके, एंड दिस वेगस नर्व इज एसोसिएटेड विद द पैरासिम्पैथेटिक नर्व. दिस वेगस नर्व इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट. ओके, sympathetic nerve increases the heart rate and the parasympathetic nerve decreases the heart rate. Okay. Also you can see here this adrenal gland. Adrenal gland is present just above the kidney. Here you can see these are the adrenal gland. So adrenaline, or we can say the epinephrine, which is secreted by the adrenal gland, it also regulates the heart activity. The adrenaline increases the heart rate. Okay, adrenaline basically deals with the stress hormone.
when we are too much stressed out, then our heart rate also increases. So this is due to this regulation by the adrenal gland. Okay, adrenal gland, it regulates the stress hormone. So the increase in stress, this increases the heart rate. Okay, so from this you can understand the relation of medullary region of brain, the heart and the adrenal gland. Okay, means the adrenal gland and the brain both are also responsible for the regulation of the heart along with the SA node and AV node. In normal condition, SA node and AV node, they only regulate the heart activity. Okay, normally नॉर्मल जो सिचुएशन होता है उसमें हार्ट का एक्टिविटी रेगुलेट सिर्फ हार्ट में जो टिश्यूज है, ओके, जो नोडल टिश्यू है वही रेगुलेट करता है नॉर्मल एक्टिविटीज में। मींस नॉर्मल जो ब्लड पंपिंग होता है, ब्लड रिसीविंग होता है, वो हार्ट का नोडल टिश्यू ही करता है। एंड दिस sympathetic nerve, parasympathetic nerve, then this adrenaline, they regulate the heart's activity in some particular or specific condition. Okay, that's all about the regulation of cardiac activity. Okay, so next is the disorders of the circulatory system. So we have discussed about the full circulatory system. Okay, we have discussed about the heart, about the human heart, the different chambers of the human heart, कैसे हार्ट से ब्लड पंप होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है ऑल ओवर द बॉडी, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, देन हार्ट पंप्स इट बैक टू द लंग्स. ओके, बट इन दिस फुल प्रोसेस, फुल सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ डिसऑर्डर्स भी होता है. डिसऑर्डर्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, मेनली इट इज रिलेटेड टू द हार्ट ऑब्वियसली एंड द blood and the blood vessels. Okay, so the first disorder which we are going to discuss is high blood pressure. It is also known as hypertension. Okay, so the normal blood pressure in human is 120 by 80. Okay, this is the normal blood pressure and the unit of blood pressure is mmHg. Okay, millimeter and mercury. Okay, so 120 by 80 is the normal blood pressure. अब ये 120 क्या है? 120 is the blood pumping, means जब सिस्टोल होता है तब जो प्रेशर होता है in the heart is 120 और 80 है diastole. Okay, 80 is the diastole, means when heart is at rest. ओके, इसलिए जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है इट इज 120 by 80. 120 इज द सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज द डायस्टोलिक प्रेशर. ओके, अब हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? जब द प्रेशर इन द सिस्टोल इज 140 एंड द डायस्टोल इज 90. 140 by 90 or more than this is high blood pressure. Okay, 120 by 80 is normal and 140 by 90 is a condition of high blood pressure. Okay, the systolic pressure 140 है और diastolic pressure 90 है, means that person has high blood pressure, means hypertension. Okay, or more than 140 in systole and more than 90 in diastole. Okay, so this is the high blood pressure. Next is coronary artery disease, which is also abbreviated as CAD. Okay, so coronary artery, we have discussed in our last class what is coronary. So coronary artery, it is related with the vessels which are present inside the heart. Okay, this coronary क्या करता है? Coronary circulation means heart से heart तक जो circulation होता है, heart में भी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, तो heart से कोरोनरी आर्टरी, हार्ट के जो डिफरेंट मसल्स है उसमें स्प्रेड होता है, तो उसको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी. और कोरोनरी आर्टरी से ही हार्ट में मींस फुल
हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई होता है। ओके, सो ये कब होता है? जब कोरोनरी आर्टरी मींस ये जो कोरोनरी आर्टरी का जो वेसल है, वेसल में कुछ डिपोजिशन हो जाता है। ओके, कोई भी वेसल का एक पर्टिकुलर थिकनेस होता है जिससे ब्लड फ्लो होता है और वहाँ पे पर्टिकुलर प्रेशर होता है, और अगर उस वेसल का थिकनेस अगर डिक्रीज हो गया, बहुत ही नैरो अगर हो गया थिकनेस, अभी नैरो क्यों होगा? दिस इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सम सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम। ओके, कोरोनरी आर्टरी में कभी कुछ डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, देन फैट, देन कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, ओके, फाइब्रस टिश्यू डिपोजिशन, ये सब का अगर डिपोजिशन हो जाता है इन द कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी में अगर कोई डिपोजिशन हो जाता है, तब क्या होगा कि उसका जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। सपोज दिस इज ए वेसल ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ओके, तो इसका एक पर्टिकुलर एक थिकनेस है, ठीक है। अगर इसका वॉल में कुछ अगर ऐसे कुछ डिपॉजिट हो गया, मान लो, ठीक है, कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, एनीथिंग, अगर ये कुछ भी डिपॉजिट हो गया, देन इसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो गया तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन can't travel to the heart, okay, through this coronary artery. At that time जब disease होगा due to less supply of oxygen in the heart, this is the coronary artery disease. Next is angina, and also it is known as angina pectoris. Okay, angina pectoris is a disease where the patient has symptoms of chest pain. Okay, chest pain होता है patient को. This chest pain is due to less oxygen supply to the heart. Okay, लंग से जब ऑक्सीजन थ्रू द पल्मोनरी वेन हार्ट में आता है, अब वो ऑक्सीजन अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं आया, कम ऑक्सीजन आता है, देन what will happen? The heart will not receive the sufficient amount of oxygen. At that time, that person will suffer a pain in the chest, and it is known as angina or angina pectoris. Okay. Next is the disorders which we are very familiar. These are heart failure, cardiac arrest, and heart attack. We have heard these terms many times, but what are the differences between them? Okay, क्या difference है heart failure, cardiac arrest और heart attack में? Okay. So let's discuss about this. Heart failure कब होता है? जब heart blood pump effectively नहीं कर सकता throughout the body. Okay, heart का main काम है to supply or to distribute oxygenated blood throughout the body tissue. Okay, जब heart sufficient amount में blood pump नहीं कर सकता, ओके, अपना जो मेन काम है वो फुलफिल नहीं कर सकता इफेक्टिवली, डिफरेंट ऑर्गन्स में एंड डिफरेंट टिश्यूज में ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता, दैट मीन्स द हार्ट इज फेल टू डू इट्स वर्क. ओके, एट दैट टाइम द कंडीशन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट फेलियर. ओके, हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट फेल्स टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. ओके, अगर हार्ट फेल हो गया तो हार्ट पंप नहीं कर सकता ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन डिफरेंट ऑर्गन्स. ओके, सो दिस इज द हार्ट फेलियर. देन द कार्डियक अरेस्ट. अरेस्ट मीन्स किसी चीज को बंद करना. ओके, सो कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक मीन्स हार्ट, सो कार्डियक अरेस्ट मीन्स हार्ट का जो काम है, मीन्स हार्ट का मेन काम है टू बीट, टू पंप द ब्लड. ओके, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, then this condition is known as cardiac arrest. Means heart beat करना stop कर देता है. Okay, so this is the cardiac arrest. And the third one is heart attack. Okay, heart attack occurs when the heart muscle, or we can say the cardiac muscle, is suddenly damaged. सडनली इफ इट गेट डैमेज, सडनली जो हार्ट मसल है वो डैमेज हो जाता है, तब उसको कहा जाता है हार्ट अटैक. ओके, हार्ट फेलियर में हार्ट पंप नहीं कर सकता इफेक्टिवली ब्लड और इफेक्टिवली ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है,
And in heart attack, what happens? Heart muscle suddenly it get damaged. अगर heart muscle damage हो गया, then also heart will fail and there will be cardiac arrest. So basically these three terms are related with each other. Okay, ये जो three terms है means heart failure, cardiac arrest and cardiac attack, तीनों के वजह से ही ultimately heart का जो काम है वो बंद हो जाएगा. But ये तीनों का नाम different है due to the reason of its failure or due to the reason of the disorder of the heart. Okay, so these are the different disorders of the circulatory system, and with these we have completed this chapter, body fluids and circulation. Okay, so in this chapter we have discussed the complete circulatory system of human being. Circulatory system which includes the blood, that different components of the blood. Then we have discussed about the lymph. Then we have discussed about the human heart, the functioning of the heart, the cardiac cycle, the double circulation, how this cardiac cycle can be measured with some specific test, that is ECG. Okay, how the functioning of the heart is regulated, and what are the different disorders of the circulatory system. Okay, so go through all the videos to get complete details of the chapter, that is body fluids and circulation. So that's all for today. Thank you.